is shining. क्योंकि अल्लाह का अपना कोई मजहब नहीं है. Because God has no religion of His own. वो तौरात उसका मजहब तो नहीं है, ज़बूर भी नहीं है, इंजील भी नहीं है, कुरान भी नहीं है. Because He doesn't follow the Quran or the Old Testament or the New Testament or the Psalms of David. उसका मजहब लव है, मोहब्बत है. His love, His religion is of love. जो उसे मोहब्बत करे उसे मोहब्बत करता है. Those that love Him, He loves those. फिर दिल पे हाथ रखे कभी कभी, जब दिल धड़के तो उसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाए. So in addition to writing on the paper and looking at the pulse, sometimes put your hand on your heart. When you feel your heartbeat, with each and every heartbeat, try to say Allah, Allah. कभी नब्ज़ पे हाथ रखे उसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाए. Sometimes put your fingers on your pulse, feeling your pulse with each and every pulse. Try to match Allah, Allah with it internally. Try to absorb it. कभी कोई ऐसी वर्जिश वगैरह करे या दौड़े जिससे दिल धड़के उसके साथ अल्लाह. Sometimes do some form of physical exercise, walk up and down the stairs. When you feel that your heart is beating fast, then with that try to match Allah, Allah, Allah. ये तो पता नहीं कब लिखेगा, कब आंखों में आएगा, अभी से बस दिल ही दिल में अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दे, खामोशी से. You may write on the bulb or the paper or look at it after a few days, but something you can do straight away, and that is inside your heart. Try to imagine that your heartbeat is saying Allah, Allah inside. अभी तो साइलेंट हो गया, हार्ट बीट के साथ नहीं होगा, अभी तो खामोशी से. तो जिस दिन हार्ट बीट के साथ अल्लाह अल्लाह होगी, समझ अब मेरी कामयाबी होगी. Initially what you can do now straight away, imagine that inside your heart Allah, Allah is happening. When you feel your heartbeat, try to match it with that. And the day that your heartbeat actually accepts Allah, Allah and it says it itself, then understand that you are successful. इसके लिए अगर जिक्र लेना चाहे तो जुबान के साथ. If you wish to take this teaching from us, then we will say Allah, Allah. You will repeat after us, and then we will have blessed you with this teaching. Yes. क्या बोलते हैं? ठीक है. Yes. हाँ, पढ़ें अल्लाह Say Allah. अल्लाह 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 अल्लाह. बस. That's it. अब मुझसे पूछें, ये कुछ पूछना चाहता है. So if you have any questions, feel free to ask them, please. Any question relating to spirituality, the heartbeat, the love of God, the light, anything that Surah Shah said that you haven't understood or wish for them to elaborate on, you may have a question on. Please feel free at your own time to ask. वो तो प्रैक्टिस कर रहा है, बस उसके साथ मिल जाएगा इंशाल्लाह. That's what I'm saying. In your case, you're practicing, and God willing, it will match. Why have so many abandoned love? Sorry. Why have so many gotten abandoned love? मैंने पूछा As a way to unify people. मैंने पूछा कि दुनिया के अंदर अक्सर लोगों ने मोहब्बत को क्यों भूल गया वो. ये एक तरीका जिस तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं. वो एक तो मोहब्बत है ना, जो जिस्मों की मोहब्बत है, वो जिस्मों से लोग मोहब्बत कर रहे हैं एक दूसरे से. जानवरों में जिस्म है, जिस्मों से जानवर, बच्चों से मोहब्बत कर. There are different types of love. When you talk about physical love, people physically they are united, or even the animals are united. ये और रूहों को इस जिस्म में नहीं देखा. ये जिस्म, इस जिस्म ने अल्लाह को तो नहीं देखा. तो अल्लाह को नहीं देखा तो ये जिस्म अल्लाह से कैसे मोहब्बत करेगा? This physical body has not seen God. The soul inside has seen God. So how can the physical body love God? जब वो सोल, रूह बेदार होगा ना, तो बेदार तब होगा ना, उसमें वो खुराक जाएगा, बेदार होगा तो उसके जरिए इस जिस्म में मोहब्बत आएगा ना. When the soul is awakened inside, and then it starts to love God because it has seen God, only then will love come inside the body. कहा जब बेदार होगा तो फिर तो जिस चीज का अल्लाह से तल्लुक है ना, उसको जगाओ ना, वो तुम्हारे अंदर सो रहा है. That thing which is connected to God, it is asleep inside you. You must awaken it. Now when it's awakened, it will love God. तो जो सोया हुआ आदमी वो किसी से क्या मोहब्बत करेगा? That person which is sleeping, how can that love somebody? पहले उसको जगाओ, उसको खुराक दो, फिर वो मोहब्बत उसमें आएगी, उसके जरिए तुम्हारे में आएगी. Then first you awaken the soul inside, then the light is created, and
and through that light it obtains the love of God, and only then will you have love. To answer your question, when each individual person has that love inside, love of God, they will all share that love of God. That's how they will love each other. Love each other and love God in the proper manner. ये जिस्म उधर भी नहीं आगे भी नहीं होगा, ये है ना वो उधर भी थी और उधर भी होगा. This body that you have, you didn't come with it from when God created the souls when He had it in this world, and you will not take the same body with you when you go. But the soul inside you is the same soul that was created by God and came inside you when you were born, and is the same soul that will go up to God after your death. I feel so, there's a lot of pleasure and enjoyment that I hear that there is more people being aware, made aware of what we can do for each other. I have felt alone for the longest time. It felt in this country we didn't want to love one another, love God, or anything. So it was about me. And I'm so happy that He has come with this message to us because it's very much followers. Sure. So कह रहे कि बहुत लंबा अरसा ही गुजर चुका है कि हमने इस मुल्क के अंदर रहते हुए देखा कि ना कि लोगों के अंदर मोहब्बत है, नफरत चाहिए हुई है, ना अल्लाह की मोहब्बत की तलाश है लोगों को. और आपका यहाँ तशरीफ़ लाना और इस पैगाम को लेके आना हमारे लिए बहुत बड़ी सादत है और खुशकिस्मती है, और इस चीज़ को बड़ी तरह खुशी हुई. मतलब चला कि लोगों की मोहब्बत ना हो तो खैर है, लेकिन अल्लाह की तो मोहब्बत होना सदा रहना होना. So God is saying that even if people don't love each other, it doesn't matter. But there is one place that we will live forever, that is in the abode next to God, so to speak. It is important that we find the love of God. तो हम पूरी दुनिया में ये बातें सुना रहे हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन कुछ लोगों को शऊर तो आ रहा है ना कि अल्लाह से मोहब्बत कैसी होती है. We travel throughout the whole world telling people of these teachings. Many people believe it, many don't believe it. But at least one thing that is being achieved, that people are becoming aware of how to find the love of God. हम तुम्हारे शहर में है ना, अगर तुम पूरे शहर में से एक आदमी भी इसको समझ आएगा ना, तो सारे शहर वालों को समझा देगा ना. Now we have come to your town, and if from the whole town, from the whole population, if at least one person can understand these teachings and accept them and apply them to themselves practically and benefit from them, then at least that one person will be beneficial to the whole town. You can tell others. वो शैतान एक है ना कि पूरी दुनिया को मुसीबत में डाला हुआ. Satan is only one, and then he's in trouble in the whole world. ऐसा किसी एक आदमी भी डर जाए ना, पक्का हो जाए ना. हम भी एक ही था दुनिया में, पाकिस्तान में एक तो पूरी दुनिया में इस पैगाम को पहुंचा दी. In a similar way, if one person can be steadfast and accept this wholeheartedly, then they will do a lot of work. Like we were only one in the whole world, and then this message is spread throughout the whole world. जब आदमी दिल से शुरू हो जाता है अल्लाह उसको मदद करता है. When a person accepts something from their heart and makes the effort from their heart, and God helps that person. हम सोचता था कि हम अमेरिका जाएगा, फिर सोचता था इतना खर्चा हम कैसे बर्दाश्त करेगा, इतना किराया इसका कहाँ से आएगा, ये सोच के ना हम खामोश हो जाता था. So I used to think that how will I ever manage to get to America one day? It will cost so much money and so much effort will have to be made. So I used to just go quiet. लेकिन हमारी नीयत ये थी कि वहाँ भी जाएं, ये पैगाम पहुँचाएं. अब अमेरिका से टिकट जाते हैं फर्स्ट क्लास के हमारे तक. Now what happened is that our intention was, we had sincerity, that this message of God should reach those corners of the globe also. And now what happened is people sent us first class tickets and they die for us to come here all the time, being here. अल्लाह चाहता है तब वो पीपल फिरते हैं. Because God wills this, for this to happen, this is why people want us to come and talk to them and tell us about these teachings. क्योंकि हम इधर आने से पहले हम देखता था ना रूहानी तौर पे कि दुनिया में कोने कोने में ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह चाहता है और जो अल्लाह की तलाश में. Because before coming here, I've seen spiritually, I used to see that there are people all over the world, in every corner of the world, that God loves very much and they are seeking God. लेकिन उनको अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता नहीं, वो उसको जंगलों पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं, वो दिनों में. But the only thing was they did not have the path to find God. They were looking for God in the jungle and in the mountains. But the way to find God was the heart.
जिसमें हमें बहुत कम